The topic today that we're going to talk about is diabetes type 1. अभी ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में शुगर एक्यूमुलेट होगा और उसके चक्कर में फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि अगर आपकी जीन्स में है तो ये आपको ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक एज पे होगा ही होगा बट टाइप 1 इज बेसिकली टोटली डिफरेंट। वो आपका नहीं है कि भाई आप क्या खा रहे हो क्या नहीं, वो बस हो गया। थर्स्टीनेस बहुत फील होता था, मुझे बहुत गंदी प्यास लगती थी। लो शुगर अगर आप उसको कंट्रोल ना करें तो यू कैन इंस्टेंटली गो इनटू डायबिटिक कोमा व्हिच इज वेरी डेंजरस। हाय एवरीवन, वेलकम टू सोशल अनटोल्ड। आज हमारा जो टॉपिक है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक। आप लोगों को काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है विच मे बी यूजफुल फॉर यू और इट may be useful for someone in your family or friends. The topic today that we're going to talk about is diabetes type 1, to be very specific. And I have my sister over here who will be talking about it. She is someone who has lived with diabetes type 1 for over 26 years, I believe. Yes, right? yes. So I would say she does have a fair enough knowledge about the whole thing, the whole disease, how to deal with it, how to live a healthy life, a normal life with it, and bring it on. Let's discuss. Yes, what do you want to know? सबसे पहले तो I would want to know more about type 1 and type 2. This is something जो मुझे भी नहीं पता था, even though my sister is someone who has lived with it for a very long time. मुझे बहुत टाइम बाद जाके पता चला था that there are two types of diabetes. There is type 1 and there's type 2. Now, what is the main difference between these two diabetes? Okay, so first of all, मुझे पता चला था when I was 18 years old. So after 10 years of living with type 1, तब मुझे पता चला कि दो types होते हैं. So basically type 1 is like an autoimmune condition. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी ऑर्गन है पैंक्रियास, वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी वो इंसुलिन से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में शुगर है उसको वो कंट्रोल करता है, राइट, उसको ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जब आपका पैंक्रियास जो है वो आपकी बॉडी में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है आपका, वो उन सेल्स को एक एज अ आउटसाइडर आइडेंटिटी वो उसको लगता है कि ये है तो हमने इसको अटैक करना है। ठीक है, दिस इज लाइक डेंजरस फॉर द बॉडी, तो वो अटैक करता है, उनको किल करता है। ठीक है, अभी ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में शुगर एक्यूमुलेट होगा और उसके चक्कर में फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी विच इज ऑब्वियसली डायबिटीज। टाइप 2 इज बेसिकली अ कंडीशन जो आपको लेटर ऑन इन लाइफ होती है। ठीक है, सो यू हैव टू बी लाइक 40, लेट 40s और 50s और 60s, बट देन इट इज बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। ठीक है, आप क्या खा रहे हो, आपका डेली आप कितना एक्टिव हो, आपका लाइफस्टाइल के बेसिस के ऊपर आप डिपेंड करता है। ठीक है, ये इनहेरिडिटरी भी होता है आई थिंक कि अगर आपकी जीन्स में है तो ये आपको ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक एज पे होगा ही होगा, बट टाइप 1 इज बेसिकली टोटली डिफरेंट। वो आपका नहीं है कि भाई आप क्या खा रहे हो क्या नहीं, वो बस हो गया। ठीक है, तो आपने उसको डील करना है। So you're saying कि type 2 जो है वो is it very uncommon between younger generation Yes. या होता ही नहीं है? I don't believe ये younger generation में होता है. It has to be in the older side, like at least 40s above. Obviously अगर कोई डॉक्टर कोई करेक्ट करना चाहे मुझे, आई एम नॉट 100% श्योर, बट दिस इज व्हाट आई थिंक, जितना मुझे पता है कि ये ओल्डर एज में होता है ज़्यादा। टाइप 1 बहुत यंग एज में होता है, लाइक when I was 8 I was diagnosed, right? तो अभी लिटरली कुछ दिन पहले someone from the family called me and they were telling me about this person they know जो 18 years old हैं, obviously quite young, very young. He got diagnosed with type 1 and then उसकी mom भी बहुत worried थी कि कैसे होगा, क्या करना है। तो this family relative of me started asking me questions कि क्या पता है उनको कैसे help हो सकती है, so I kind of shared some information with her. But yeah, I think it's more prone towards the younger lot. Right. Kids and then young adults. Okay. And do we know what causes that? Your pancreas to fail? Is there like... I have no idea. Okay. Okay. Fair enough. So type 1 के क्या symptoms है? Like if somebody doesn't know that they are, they have diabetes,
is there any particular symptom that they should look out for कि उनको अगर ये चीज हो रही है तो maybe they should go see a doctor कि it could be something diabetes Absolutely. related? Yeah, absolutely. So I was 8 and I had no idea I was dealing with diabetes. I was becoming very weak. I was losing a lot of weight. I was becoming, my skin was going very pale. So, but I had no idea. My family had no idea because nobody had dealt with the, condition. किसी ने देखा नहीं था, किसी को तो कुछ idea नहीं था. Also, I used to have a lot of, thirstiness बहुत feel होता था. मुझे बहुत गंदी प्यास लगती थी. Like 5 मिनट बाद मैंने अभी बहुत सारा पानी पिया and बहुत सारा पानी है जैसे मैं आधी बोतल पानी पी गई हूँ. 5-10 minutes max, and then I need the same amount of water again. This is not normal, right? तो इस तरीके की जो एक्स्ट्रा प्यास लगना, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉशरूम जा रहे हो, आपको बार बार अर्ज आ रही है, दैट्स वन इम्प्लीकेशन ऑफ हाई ब्लड शुगर. आप वीक हो रहे हो, ऑब्वियसली यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम, आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, कुछ आपका एक्टिव नहीं हो, आपका दिल नहीं कर रहा, बैठे हो बस ऐसे, आपका कुछ दिल नहीं कर रहा उठने का. ऑल दोज एक्टिविटीज जो आपको अच्छी लगती थी पहले करने को, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलना, अब आपका नहीं दिल करता. तो वो जो एक सिचुएशन है, आपकी स्लीप अफेक्ट होती है, ये सब चीजें एक सिम्टम्स हैं कि यू नीड टू गो सी. एंड दीज आर नॉट नॉर्मल इन अ हेल्दी पर्सन्स लाइफ, राइट? सो आपको कुछ भी ऐसा हो, it's the best that you go and see a doctor instantly. और जिनको let's say कोई, I'm sure ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी नया नया डायग्नोसिस हुआ है उनको, and they are not sure on how to differentiate a low diabetes, the hypos, high है या sugar low है. What's the difference? So basically, I'll go through the symptoms in a minute, but I just want to say कि अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हो गई है, ठीक है, अगर आप टाइप 2 डायग्नोज हो, ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको टैबलेट्स पे डॉक्टर डाल देते हैं, राइट? अगर आप टाइप 1 डायग्नोज हुई है तो यू गो स्ट्रेट अवे टू द इंसुलिन. दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ऑर्गन जो बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो काम नहीं कर रहा. तो आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही है, सो देन यू जस्ट नीड दैट, राइट? एंड ऑब्वियसली जब तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आता तो आपको लाइफ लॉन्ग वो करना है, इंसुलिन इंजेक्शंस लेने हैं आपको, राइट? ओके, लेट्स गो टू द सिम्टम्स नाउ. जो नए लोग हैं डायबिटीज में, आई थिंक सिम्टम्स आर फेयरली सेम. टाइप 2 टाइप 1 बहुत सेम है, ठीक है, देयर इज नो एब्सोल्यूट डिफरेंस. तो जो फर्स्ट डिफरेंस है, लेट्स गो फॉर द हाई ब्लड शुगर. हाई ब्लड शुगर में आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, प्यास लगती है, आप बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाते हो, आप लेथार्जिक फील करते हो, ठीक है. अगर आपका शुगर कंसेक्यूटिवली 2 दिन 3 दिन हाई है तो आपको मसल पेन होगा. ओके, ठीक है, यू गेट लाइक पेन्स अराउंड योर एल्बोज, नॉट लाइक क्रैम्पिंग्स वाला नहीं, बट जस्ट लाइक जैसे आपको कभी जैसे हाँ ऐसे लाइक आप हाइक कर आए और आपकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, वैसे टाइप का. तो आप अगर कोई एक्टिविटी नहीं की और आपको ऐसा जस्ट बैठे बैठे लग रहा है कि मुझे दर्द क्यों हो रहे हैं, एंड यू थिंक अबाउट ऑल दोज सिम्टम्स, आपको प्यास लग रही है, देन यू नो दैट इट्स हाई शुगर. ठीक है. विद लो शुगर you feel dizziness, your body starts trembling because you're feeling the weakness suddenly. क्योंकि आप में हिम्मत, एक बंदा का हिम्मत वो खत्म हो जाती है. आपको डिजीनेस इतनी होती है टू एन एक्सटेंट कि अगर आपका शुगर आप उसको इंस्टेंटली ट्रीट नहीं कर रहे हो तो देन वो जो एक बिल्कुल लो एंड पे जाके बॉर्डर पे जाती है, तो आपको इवन ब्लैकआउट भी हो सकता है. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दिस है कि low sugar is more dangerous than high sugar, because high sugar is dangerous long term, क्योंकि वो आपके organs को इफेक्ट करेगा, राइट? लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करना शुरू कर दें तो वो लॉन्ग टर्म है, तो आप उसको उस लॉन्ग टर्म तक जाने से पहले ही रोक सकते हैं. बट लो शुगर अगर आप उसको कंट्रोल ना करें तो यू कैन इंस्टेंटली गो इनटू डायबिटिक कोमा, व्हिच इज वेरी डेंजरस. कोमा सुन के ही ऑब्वियसली सबको समझ आ जाएगा. सो you need to make sure कि आपके पास हमेशा फास्ट एक्टिंग क्या कहते हैं उसको, yes, the glucose tablets or anything, you have something. if you feel low suddenly, जिसको हम हाइपो कहते हैं, हाइपोग्लिसीमिया, राइट? अगर आपको एक हाइपो का एपिसोड फील हो रहा है एंड
for example you're driving, right? So you need to have something in the car, a drink or another thing जो मैंने इनसे ही सीखी है कि solid sweets खाने से बेहतर है आप liquid लें because that affects much quicker. yes अगर आपकी लो शुगर है आप कोक या कोई जूस इस तरह की चीज पियेंगे तो आपका शुगर लेवल जल्दी कंट्रोल होगा, ना कि आप बिस्किट खाएं या कुकीज या इस टाइप का कुछ चीज खाएंगे तो इट विल टेक मच लॉन्गर. yes but I'll tell you one thing, एक डिफरेंस है जो मैंने भी बहुत सालों में सीखा है कि the best thing to treat a hypo is to keep the smaller 150 ml classic coke, not diet sugar, yeah and not zero sugar, yeah classic coke, but the 150 ml, that's the perfect size. ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका 4 जो मैट्रिक्स ग्लूकोज के होते हैं 4 नॉट्स ऊपर ले जाता है, 4 पॉइंट्स. ठीक है, तो अगर आपकी 4 इज द नॉर्मल रेंज 4 to 7, तो जब 4 से लो नीचे जाएगी तो आपकी लो में आएगी, हाइपो में, राइट? तो अगर आप सपोज 3 है तो वो 4 पॉइंट्स ऊपर लेके जाता है, which is 4, 5, 6, 7. So it will bring it up to 7, right? But then जो लिक्विड होता है वो आफ्टर लाइक सम टाइम, लेट्स से हाफ एन आवर और समथिंग, वो आपकी ब्लड शुगर वापस ड्रॉप करेगा. सो टू इंक्रीज इट क्विकली, क्योंकि आपको वो इतना लो फेज फील उसमें नहीं जाना, आप जल्दी से ड्रिंक लेते हैं. दैट्स व्हाट द नर्सेज हियर सजेस्ट. दैट्स द बेस्ट वे कि आप उसको फौरन से पहले इंक्रीज करें. वो 30 मिनट्स वो इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेंट, विद इन लाइक 5 मिनट्स, उससे भी कम में आपका ऊपर हो जाएगा. बट देन आपको लगेगा कि अब तो ठीक हो गया. So now I'm fine, now I'm driving, I'm fine, I'm gonna go back to sleep or whatever. लेकिन वो 30 minutes to an hour again उसके बाद वो वापस से लो आएगा. तो ये मैंने एक नई चीज सीखी है लास्ट फ्यू इयर्स में कि जब आप वो ड्रिंक ले लो तो आफ्टर हाफ एन आवर 20 minutes to 30 minutes have like either a banana or like a cookie or a biscuit, Mary biscuit, a digestive biscuit, जो भी आपके घर में है, कुछ ऐसा हल्का फुल्का कार्ब आप ले लें. Right. Okay. तो वो फिर क्या करेगी, जब वो 7 पर जाएगी, it will drop back to like 4, 6, 5, 4, but then it would stay around 5 or 6. Right. तो वो आपका नॉर्मल रहेगा. That's the best way to deal with a hypo. So make sure कि आप ड्राइव कर रहे हो, आप सो रहे हो, जब आप सो रहे हो आपके पास टेबल पर आपके बेड साइड पे कुछ होना चाहिए हमेशा. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होगा कि आपकी आंख खुलेगी और आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप उठ के जाएंगे किचन तक और फ्रिज में जाएंगे, कुछ निकालेंगे ड्रिंक और ढूंढ के पी लेंगे. आपको इंस्टेंटली चाहिए. तो जस्ट मेक श्योर एवरी नाइट यू हैव समथिंग. राइट. मतलब ड्रिंक्स भी सिर्फ रख लेंगे ना तो आपके पास इतनी एनर्जी 5 मिनट में आ जाएगी कि यू आर फाइन इनफ टू गो वॉक टू द किचन एंड देन गेट समथिंग और आस्क फॉर हेल्प. या एग्जैक्टली. अगर कोई आसपास नहीं है आपके, एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अकेले रहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, Yes, दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में absolutely, रहते हैं, जो भी, तो दिस इज समथिंग यू शुड रियली लुक आउट फॉर. yeah. Okay, so any tips that you would give apart from this कि अपने पास कुछ मीठा रखें? Tips on how to stay healthy, because एक misconception है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो they're not gonna be able to lead a healthy normal life. बहुत लोग Yeah. डर भी जाते हैं इस चीज से कि oh my god diabetes, oh my god. Yeah, absolutely. I don't think it's that big of a deal, seeing you how you've dealt with it. You're doing everything in your life that any other person who's absolutely healthy would do, and I don't think it has had any kind of like extreme impact on your life. No. So I think the most biggest misconception with diabetes is like अगर आपको शुगर हो गया तो then you need to absolutely stop eating everything sweet, right? Which is ठीक है, आपको समझ आता है कि आपको मीठे पे कंट्रोल करना है, right? You cannot just go around and have cakes and fizzy drinks and whatever you want to eat in life. You can't do that anymore. But you can still enjoy all those things, but in a limit. Yeah. Okay. So when if you remember when I was young and I stopped eating rice, and I love rice. Yeah. So we went to Lahore and we met this doctor. Yes. And he told my mother, because I was just like 10 or 11, so he told her ke no, she's just growing up, let her eat whatever she wants. Yeah. But just make sure whatever she's eating, she's having her insulin accordingly. So that is the best thing. You just need to make sure कि अगर आपका राइस खाने का दिल कर रहा है और like whatever potatoes, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, तो just make sure that
you're calculating what you're eating, ठीक है, एंड देन उसका रेशो के हिसाब से विच यू कैन गेट फ्रॉम योर डॉक्टर. एवरी पर्सन इज डिफरेंट, ठीक है. आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो पर्टिकुलरली, अगर मैं एक पैकेट ऑफ क्रिस्प खा रही हूँ एंड अगर आप एक पैकेट ऑफ क्रिस्प खा रही हैं तो आपकी बॉडी मे बी उसको 4 units of insulin चाहिए, but maybe mine needs 6 insulin, 6 units, right? So it depends differently. हर बंदे का अपना होता है. तो your doctor or your diabetic nurse, they can help you with that. वो आपको एक जर्नी है, I'm still going through it, कि आपका क्या रेशियो सेट बैठता है, हाउ मेनी कार्ब्स, यू नो, आपको उस कार्ब्स के लिए सपोज 10 ग्राम्स के लिए आपको कितनी इंसुलिन चाहिए, दैट रेशियो यू नीड टू फिगर आउट, एंड वंस यू फिगर दैट आउट देन ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉर्मल. तो आप बस ये कैलकुलेट करो कि मैं 100 ग्राम्स ऑफ यू नो कार्ब्स खा रहा हूँ, उसके लिए मुझे ओके डॉक्टर ने इतना बताया, मुझे इतनी इंसुलिन लेनी है, यू शुड बी फाइन. But the only thing is that don't make having fizzy drinks or cakes and this and that normal in life. Yeah. You can have it like कभी दिल कर गया दोस्तों के साथ बाहर चले गए, fine. It's not a big deal. But कुछ लोग होते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा cravings होती हैं, जिनका यहाँ blood sugar बिल्कुल control नहीं है. I went through that phase. But उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ, you need to, you know, stop yourself from doing that because it's gonna affect you long term. Yes. Anything like apart from diet, food and all that, you need to stay active. You need to do some sort of sports, exercise, gym, whatever you want to do. Just you need to make sure you're active. आप बैठ नहीं सकते. That is a big thing. अगर आप ये, जो लोगों को डायबिटीज है वो खुद से ये फील करेंगे कि once you start exercising or like walking around, you know, doing chores or bits at home, whatever, you just need to be active, moving around. That really helps. अगर आप obviously young है, you're like you know, growing up, अगर आप 18 years से young है, even like for young adults, having some sort of sports or maybe even going to the gym for guys, it would help. Yeah. Youngsters, as she mentioned earlier, कि type 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज होती है वो यंग लोगों में ज़्यादा कॉमन है. तो आई वुड से वन थिंग कि अगर इफ़ यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद इट, आई अंडरस्टैंड कि इट कैन बी स्ट्रेसफुल, बट ऑल्सो इट्स नॉट समथिंग दैट ह्यूज. अगर आप चाहें तो आप उसको कंट्रोल करके अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं. बट ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, आप एक्टिव रहें, because if you're not doing that and if your blood sugar levels are constantly high, शायद आपको उस टाइम पे इतना फर्क नहीं समझ में आएगा. you'll be like कि हाँ ठीक है, हाई हो जाती है, लो हो जाती है, but then I control it. लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको और प्रॉब्लम्स दे सकता है. it can affect your eyes, which is a massive concern, क्योंकि you know आंखें बहुत बड़ी नेमत है. ये जो हैं इन्होंने इतना फोकस नहीं किया था इनिशियल इयर्स में, अपना नहीं ध्यान रखती थी. Oh, my And then blood sugar was very, her very blood poorly sugar was managed. very poorly managed, very high for very long term. And then at one point she realized कि it started affecting her eyes. और उसके बाद जब ज़्यादा awareness आई, इनको खुद भी इन्होंने अपना research करना शुरू किया, and then she started controlling. That's when the change happened and she was like, okay, Yes. I need to give up on these fizzy drinks and all these sweets that I consume on my daily basis. And I'd like to just mention here कि like at some point in my life I used to think कि मैं कोक के बगैर तो नहीं रह सकती. हाँ. ये दिन में 2 कैन तो पीने ही पीने हैं लीस्ट, ठीक है. उससे ज्यादा भी होता था. तो आई वुड जस्ट, मुझे पता है कि सब लोगों के साथ ये होता है, ठीक है, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि वो कोक और ये फिजी ड्रिंक्स तो बहुत नॉर्मल है. हाँ. तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल देम कि जस्ट कुछ मत करो, स्वीट्स, केक्स, कुछ भी खाना है खाओ. जस्ट डिसाइड वन थिंग कि फिजी ड्रिंक स्टॉप करने हैं मैंने. कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी क्रेविंग हो जाए, मैंने कोक नहीं पीनी, Take one step at a फिजी time. ड्रिंक्स नहीं पीने. एक स्टेप लो, कि दैट्स व्हाट आई डिड, राइट. आई जस्ट स्टॉप. मैंने कहा मैं कुछ भी खाऊंगी, मैं बस फिजी ड्रिंक नहीं पीऊंगी. 3 months आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ. एंड वो दिन है और आज का दिन है. मेरे सामने कोई पी भी रहा हो, कोई फोर्स भी करे ना कि यार ये पी लो एक, तो आई, इफ आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू. यू जस्ट नीड टू कंट्रोल. एंड सिर्फ मैंने फिजी ड्रिंक्स कंट्रोल किए थे, मेरे केक्स भी बंद हो गए,
मेरा मतलब आई डोंट गेट आई दोज थिंक अर्जेस वो क्रेविंग एनीमोर, खत्म हो जाती खत्म है हो अगर गई आपकी है। डायबिटीज कंट्रोल है, तो आपको मीठे की क्रेविंग भी नहीं दिस होगी। इज व्हाट आई रियलाइज्ड कि जब मेरा डायबिटीज बहुत, मेरा शुगर बहुत हाई रहता था ना, तो मुझे हाँ और मीठा खाने का दिल करता था, हाँ और या ज्यादा मीठा खाने का दिल करता था। ठीक है, जब मेरा शुगर कंट्रोल होता है, जब मेरा ब्लड शुगर बहुत लाइक बिल्कुल नॉर्मल है, तो आई डोंट फील एनीथिंग, लाइक मुझे कोई जबरदस्ती भी बोल देंगे यार ये पी लो एक कोक, अच्छा मतलब बर्गर खा रही हो, व्हाई यू हैविंग वाटर विद इट, तो लाइक आई डोंट फील लाइक हैविंग इट, दिल नहीं कर रहा है। तो कोई आपको ऑफर भी करे तो तब भी आपको उतना नहीं दिल करेगा। दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रीच। एक बार बस वो अपना बना लो कि मैंने 3 months नहीं कुछ पीना, एंड देन जस्ट सी इट विल चेंज इट और जस्ट लाइक अगर forever. आपको लगता है कि यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, तो स्टार्ट बाय मेकिंग लाइक ऑल्टरनेट चेंजेस। आप क्लासिक से जीरो पे आ जाएं, यू Yeah, नो, आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोगों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, देयर लाइक दिस डजंट डेवलप हो टेस्ट, जाता है। मैंने हो फर्स्ट जाता है। टाइम कोक जीरो पी थी, हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा मुझे था। तो प्रॉब्लम नहीं सेकंड, हुई। थर्ड, फोर्थ टाइम आई वाज लाइक I don't pretty find much any same. difference. लेकिन the point is कि start by making small changes. If you're struggling to completely let go, Yeah. तो at least diet या zero पे आ जाएं, और फिर eventually आहिस्ता आहिस्ता from bigger cans to smaller to completely Yeah. avoid, you know. Yeah. I think it's doable. And just remember one thing: if you're not going to control it, you're going to affect your organs, you're going to affect your eyes. That's not what you want. You don't want to be wearing chashmas when you're in your 20s. You don't want to be going for laser surgeries, which again is another thing. आपको complications उसमें भी हो सकते हैं. If you're diabetic, it's sometimes not so easy for you to go for laser surgeries and stuff like that. तो इसलिए उस पॉइंट तक आप ना पहुंचे, उससे बेहतर है कि आप डे वन से control, get your priorities correct. I'd also like to say here that with high blood sugar, with constant high blood sugar, your eyes get affected. Obviously, you won't notice it instantly, but वो आपकी affect हो रही हैं, and then by the time you would realize, it would get really bad. You need to make sure you're taking care of your nails, right? Those get affected as well. You need to make sure that you don't get injured. इम्यूनिटी का एक होता है ना, Wounds, आपके wounds जल्दी yes, heal up नहीं नहीं करते हैं. करते हैं. And once if you're suppose you're like you've got a wound or something, so then आपका that affects your blood sugar. Your blood sugars will be high until that is sorted completely. Heal up हो जाएगा. Also apart from that, आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं. My kidneys and liver, because ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं शुगर से, अगर आपके हाई शुगर्स हो, बट दे आर एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. Apart from that, one thing not a lot of people know about, I want to talk about the sensors. Oh yes. यूजुअली ब्लड शुगर जिनको शुगर होता है वो ग्लूकोमीटर यूज करते हैं विद प्रिकिंग योर फिंगर्स एंड देन टेस्टिंग बिफोर फूड एंड देन 2 hours आफ्टर फूड. दैट इज वेरी पेनफुल. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दे शुड गेट सेंसर्स. आई विल पुट अ लिंक इन द बॉटम इन द डिस्क्रिप्शन, या अगर कोई पिक्चर आपको दिखा सके हम यहाँ कहीं साइड पे, तो आई एम वेयरिंग वन राइट नाउ. सो इट्स लाइक अ राउंड सेंसर जो जिसके साथ बिल्कुल ही एक वेरी फाइन नीडल है जो आपकी जिस पेली स्किन के टॉप फ्यू लेयर्स में जाती है. What it does is it helps you to check your blood sugar using a phone. It's very simple. आप एक बार वो सेंसर लगा लें, सेल्फ एडिसिव टाइप होता है, तो it lasts for about 10 to 14 days. And you just need to scan your phone with it. Obviously आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स है. You download the app for the sensor and then you just tap your phone and then it just gives you a reading. And it's mostly accurate. बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, mostly accurate होता है. It has helped me a lot क्योंकि मैं बिल्कुल चेक नहीं करती थी. बहुत ज़्यादा मसला था, मैं बिल्कुल चेक नहीं करती थी. बहुत सारे लोग इससे अनॉय होते हैं. हर्टिंग तो ऑब्वियसली किसी का भी दिल नहीं करता रोज अपने आप को नीडल्स से प्रिक करे, बट if you can afford it, it's It's a good very investment helpful on yourself. Yes, and if you don't know about it, please go and speak to your doctor. They would know, and they If you're not in Pakistan, you can contact your GP and you can get yourself referred for this.
आई थिंक आपको करवाना पड़ता है ये, इट्स नॉट समथिंग जो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यस, बेसिकली आई थिंक एनएचएस के एक टर्म है, इनका कंडीशन है कि योर ब्लड शुगर हैज टू बी लाइक पुअर टू एन एक्सटेंट, राइट, ठीक है, आप मैनेज नहीं कर आप पा रहे हैं मैनेज नहीं कर otherwise। पा रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलरली उसको मतलब ये चेक नहीं करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वो इस वजह से आपको देते हैं, जो विच वाज माय सिचुएशन, माय ब्लड शुगर वाज वेरी पुअरली मैनेज्ड, ठीक है, एंड आई माय डॉक्टर्स केप्ट टेलिंग मी टू डू दैट, आई वाजंट डूइंग, समटाइम्स आई वाज डूइंग, समटाइम्स आई यूज्ड टू स्टार्ट आपको डूइंग, एंड हाइपोस देन भी अगर बहुत ज्यादा हो रहे एग्जैक्टली हो, बिकॉज आपको आप करेक्ट अमाउंट ऑफ इंसुलिन लेंगे तो आपकी ब्लड शुगर्स कंट्रोल होंगे, वरना अगर आप यस कितना खा रहे हैं और आप इंसुलिन उस हिसाब से नहीं ले रहे हैं तो यस यू विल डील विद हाइपोस, फ्रीक्वेंट हाइपोस जो उनके साथ हो रहा था। यस तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इट्स वेरी गुड, क्योंकि आप इंस्टेंटली ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्कैन योर फोन, यू नो ओके या इस वक्त मेरा शुगर लेवल ये है, तो उस हिसाब से आई हैव टू टेक दिस मच मेडिसिन एंड देन ईट this amount of food. and So, then the sensor also, like with the app of the sensor, it also tells you, you can put an alarm to it, तो वो आप एक set कर देते हो कि you know if it goes below this let's say number, 4 or if it goes above like say 7 or 8 or 9, you just set the range, so it gives you an alarm, so it starts beeping, your phone starts beeping yeah, कि your blood so sugar then is dropping or it's increasing yeah, to a point कि आपका high हो रहा है, तो then and then you you know can quickly go back to it, see okay, you know it's going high or it's going yeah low, so if yeah it's going low you eat something sweet, right, and then if it's going high then you know that you need to take your insulin, exactly. so it's very helpful, आपका बहुत ज़्यादा out of range नहीं जाता है, it has helped me, definitely helped Yeah. me a lot, my HbA1c, which is like the sugar result, diabetes result for like 3 months range जो वो check करते हैं hospital में, it's so much better, I can still do, you know, I can still improve it, Yeah. but it is so much better just because of this, just because of the sensor, so if you can get it, मैं बहुत recommend करूँगी कि आप ये ज़रूर लें प्लीज। पाकिस्तान में अगर कोई देख रहे हैं वीडियोस या इंडिया में देख रहे हैं, आई एम श्योर सेम ही हिसाब है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर एज वेल, इट्स pretty expensive in those countries. Well, I'm sure it's expensive in Pakistan. I'm not sure about India. I don't know वहाँ yeah. कितना है। Pakistan में I think, I am not sure, but I think it's 20. somewhere around 20, like 19,000 something per sensor. For yeah, and Which is it is like one sensor in a box? one sensor in a box, and that lasts for 14 days. Yeah. तो आपके एक महीने में 2 सेंसर बेसिकली तो लगते वो हैं। काफी That's about expensive 40,000 rupees, Pakistani rupees. Yeah, but if you can afford it, and if you're dealing with this this problem, and then also even in UK, if you're getting it through NHS, obviously that's great, and because that's free, right, and but if NHS से आपको नहीं मिल रहा है, and if they say कि you're not eligible for it, and if you still want to get it, you can get it private, but for that you have to pay, and pay के लिए 2 years back मैंने जब check किया था, one sensor was the cost of one sensor was £50. okay, so it's £100 for a month of sensor. Yes. Yeah, okay. So you can contact the company directly, and they will set an account up for you, and then they will just send you the thing every 2 months or 3 months, whatever जो भी आप उनके साथ प्लान सेट करें, वो आपको घर पे भेजते हैं, and obviously वो आपका एक it's a good way अगर आप afford कर सकते हैं, and if NHS is not giving you. But a life hack, अगर आप इंग्लैंड में हैं, go to your GP, cook up stories. Yeah. Say you're having hypos, say you're not able to control your diabetes, and they will put you up for this plan. Yes. So I hope कि आपको ये वीडियो काफी informative लगी होगी, and it helps you. And if you do have any more questions regarding this, अगर आपको diabetes हुई है या आपके friends, siblings, किसी को भी family में, and you have questions, please drop them in the comment section, and we would try our best to reply to each question. I'd love to help anyone. जिसको भी कोई information चाहिए, please हमें ज़रूर बताएं, and we'd be happy to help you. All right, guys. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Bye.